Hello friends, welcome back to my channel Let's Crack OPSC. Hope all of your preparation going well, and I hope you people are following many of the instructions regarding the important way in which you supposed to be preparing for OS examination as well as ASO examination. ମୁଁ बहुत गुड़िए वीडियो बनैछि जोटारे कि आपनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हबो स्पेशली द गोटे प्लेलिस्ट अछि जोटारे कि आपण स्मार्टली केमिति प्रिपेयर करिवे फॉर ओएस एग्जामिनेशन. आउ बहुत गुड़िए वीडियो बनाई जोठारे कि आपण पाई परिबे कि हाउ यू सपोज टू बी स्मार्टली प्लानिंग हाउ टू क्रैक ओपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. जदि बहुत जन अछंती जो माने कि ओएस एग्जाम फर्स्ट टाइम अपियर करिवे आउ रिसेंटली आई थिंक यस्टरडे ओपीएससी अपलोड कला कि 16 अक्टोबर रे एग्जाम हबो ओएस एग्जाम रो प्रीलिम एग्जामिनेशन. सो यू हाउ यू सपोज टू बी प्रिपेयरिंग. आज डिस्कशन बहुत हेल्पफुल करिवो एंड डू लाइक द वीडियो. इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव. जो माने ओएस अपियर करूचंती, जो माने एएसओ अपियर करूचंती, जो माने आईएएस दउचंती प्लस ओएस दउचंती, से माने कोन टाइप स्ट्रेटजी करिवे ता ऊपर प्लस ओएस रो जो माने ओएस 2020 देइचंती से माने व्हाट सपोज टू बी द टिप्स इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू एबे ओएस रो मेन रिजल्ट आसीबो. रिजल्ट आसिला परे इंटरव्यू पई आपनको कॉल करा जिवो. तो कोन जिंस ऊपर आपनकर फोकस रहिबा दरकार ता ऊपर भी हमें डिस्कशन करिबा. सो इट इज गोइंग टू बी वंडरफुली हेल्पफुल. लाइक द वीडियो इन एंड इफ यू एनी ऑफ योर फ्रेंड इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम्स, डू शेयर दिस वीडियो विद देम स्पेशली. बिफोर आई स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, जो माने भी एएसओ और ओएस अपियर करूचंती, वी हैव पब्लिश्ड द बुक. Our book we have already published the book, and this particular book will be helpful for your general studies preparation. OS Prelim GS paper 1 preparation pai amo book ta hochi बहुत helpful hobo. You will not get this kind of a content anywhere in the market. I am telling you, it is guaranteed, because we have prepared that kind of a hard work. Descriptive format रे answer दिया है हमरो totally आमे एबीसीडी दे बहुत गुडी पब्लिकेशन अछंती एबीसीडी दे छाडी जंती, किंतु वी हैव गिवन यू इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट. नॉट ओनली दैट, you shouldn't be buying any particular other general जीके बुक फॉर करंट अफेयर. जदि आपन को करंट अफेयर पई अलगा बुक किनिबा को न पडू, सेति पई आमे 7टा एक्स्ट्रा करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक ऑल द मिनिस्ट्रीज आपण जानथिबे लास्ट ईयर रो ओएस एग्जामिनेशन प्रीलिम रे गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड आछि. तो आमे स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड, देन ओडिसा रो करंट अफेयर रे भी कोन रिसेंटली को माने प्राइज पाइचंती, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ऑफिस हेड्स. नॉट ओनली दैट, इंडेक्सेस, डिफेंस एक्सरसाइजेस, एता सबू टोटली मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, देन जो प्रोडक्शन अच्छी एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू, सुगर कैन, ये सबू जेति की सबू टोटली इवन करंट अफेयर रो भी हमर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट रे आंसर अच्छी. सो इट विल बी वंडरफुली हेल्पफुल. डू परचेस इट. यू कैन देयर इज ए हेवी डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, and up to 300 rupees discount is there. You can directly order it from me, or you can also order it from the Amazon and Flipkart रो लिंक अछि. जदि मते डायरेक्टली ऑर्डर करबा चाहचंती 9937626493 एठारे कॉल करी सर मते बहिटा दरकार. एंड आवर बुक इज आल्सो अवेलेबल इन भुवनेश्वर, कटक एंड बरहमपुर मार्केट. भुवनेश्वर रे मास्टर कैंटीन रो पद्मालया, स्पेशली पद्मालया जो ऊपर अच्छी फर्स्ट फ्लोर रे इन फ्रंट ऑफ एम्बर फ्रंट रे जो पद्मालया बुक स्टोर अच्छी सेठी मिल परिबो. प्लस मलय बुक स्टोर जो बाणी बिहार उत्कल यूनिवर्सिटी ओवर ब्रिज तले. देन यू कैन आल्सो गेट इट इन सीआरपी रो स्वागत बुक स्टोर रे भी मिलिबो. ताकू छाड़ी की हमर कटक रे मानस भाई बुक स्टोर, मानस भाई राजा बगीचा बुक स्टोर, प्लस हमर विजय बुक डिपो जो कटक रो हमर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी गेट फ्रंट रे जो अच्छी सेठी भी आपण पाई परिबे. ताकू छाड़ी बरहमपुर रे शिवानी बुक स्टोर, शिवानी ओल्ड बुक स्टोर, देन हमर पद्मा हमर पुस्तक मंदिर and Murthy News Agency, and directly from me also you can get it.
तो आपको छाड़ी Amazon और रेस्ट ऑफ ओडिशा Amazon और Flipkart और डायरेक्टली फ्रॉम मी दे कैन ऑर्डर जनरली मु बहुत गुडी डिस्पैच करिछि डायरेक्टली एंड इट हैज रीच्ड विद इन 2 to 5 days 2 ରୁ 5 दिन मध्य रे एडा पहुंची जाईछि बुकटा जेते अधिक रिवीजन करिवे सेते अधिक आपनको बेनिफिट मिलिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो आज हम डिस्कस करिबा ओपीएससी रो हमर स्ट्रेटजी कोन रहिबा दरकार बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वांट टू मेक इट क्लियर my mentorship is totally different from others mentorship other mentors they generally feel that people should be dependent on them but my mentorship is all about making you to discover yourself and your own potential मोर mentorship दा main कथाटा कोन मु चाहे कि तमे सेल्फ डिपेंडेंट हो तम भितरे जो कैपेबिलिटी अच्छी ऊपर वाला वेदर यू आर ए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और व्हाटएवर गॉड यू फॉलो द पीपल द सुप्रीम लॉर्ड हैज गिवन सम काइंड ऑफ ए पावर एंड माय मेंटरशिप इज टू हेल्प यू रीडिस्कवर दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल सो दैट यू शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन somebody else you have to practice and discover whatever I do by using common sense I am telling you people some of the people they only read the notification that 16 October रे हमरो एग्जाम टा होबो किंतु मो मेंटरशिप कोन मु I personally read between the lines रो अर्थ होची कि को ए सो जदी 16 October रो अर्थ होची I highly appreciate OPSC for scheduling it on 16 October specially because IAS जो माने appear करिवार थिला से माने सेप्टेम्बर रे तांगर IAS main exam schedule अछि so it is a wonderful opportunity for IAS aspirant they can also appear the prelim easily number 1 second ASO exam अछि हमर 21 अगस्त रे ASO exam पिला भी appear करि परिबे जो माने apply करथिबे ताकू छाडी जो माने प्योरली OS इंटरव्यू जो माने OS इंटरव्यू अपियर करिवे सेमानको पाई भी टाइम रहिबो कि जनरली जदी एटा जो तांगे प्लान करिसंती 16 अक्टोबर इट्स ए वंडरफुल थिंग पर्सनली कि जो माने OS रे जो माने ए पाली जो अपियर करिसंती 393 वैकेंसी पाई सेमानकर इंटरव्यू सरथिबो सिलेक्शन हे कि फाइनल मेरिट लिस्ट बाहरी साथिबो सेप्टेम्बर रे तो बहुत जण सेमानक मध्यरु भी बहुत जण निजर रैंकिंग इंप्रूवमेंट पाई भी 16 अक्टोबर रे अपियर करि परिबे देन द थर्ड थिंग इज दैट एंड फोर्थ थिंग इज जो माने प्योरली फर्स्ट टाइम अपियर करिवे सेमानक पाई भी वंडरफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अपियर इन द 16 थिंग एंड अनदर एडिशनल बोनस इज स्पेशली अक्टोबर रे प्लान करबा अर्थ होची आपनको मे बी आई एम टेलिंग यू मे बी दे विल गिव यू लेस टाइम फॉर मेन प्रिपरेशन सो आज जो वीडियो अच्छी सेठारे मु आपनको गाइड करबी कि आपनको सेही टाइप स्ट्रेटजी रे चलिया पड़िबो कि मेन पाई आपनको बहुत कम टाइम मिलिबो जदि आपनको मेन पाई कम टाइम मिलिबो तो को जिंस आपनको एबुटू ही प्रिपरेशन कर दबा उचित सेटा बहुत इंपोर्टेंट एंड यू नीड टू प्रिपेयर दैट थिंग so we will be discussing see OCS main appear student मु कहली कि OCS main जो माने appear करिसंते जमानकर main रे selection हे जिवो I personally believe that whether you are selected in mains or not selected you need to be preparing for this 433 vacancies 433 because जो मानक भी main रे selection हे जाउची सेमानकर कोन जदी for example by God forbid if you will be getting a lesser rank and you will not be landing up in your desired service automatically you have to prepare for the next prelim and that is on 16th of October for that reason also you supposed to be keep on preparing for prelim simultaneously जदि आपण simultaneously prepare होचंती तो बहुत हेल्पफुल होबो people like Ketan who is having history and political science as optional in this particular case I would say दोनों हाथ में लड्डू if you will preparing for prelim also then also you are preparing for interview because in interview there can be optional related questions and it will be helpful for your interview preparation so it is very helpful जदि आपनकर ज्योग्राफी आउ इकोनॉमिक्स और एनी काइंड ऑफ ए सब्जेक्ट जदि अछि सेटारे भी आपनको बहुत हेल्पफुल हबो आपण इंटर प्रीलिम पई भी प्रिपरेशन करचंती तो आपण इंटरव्यू पई भी आपनको साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चलीची
तो बहुत हेल्पफुल हबो। ASO एंड OCS एस्पिरेंट OCS जो माने ASO ऑलरेडी अपियर करूचंती अगस्त 21 रे सेमानकर मेन कथा कौन जनरली दे लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी जो मेंटल एबिलिटी पेपर अच्छी से बहुत भल प्रिपरेशन करेंगे कला फल कौन हम कि तुमको GS2 जो पेपर अच्छी 16 अक्टोबर GS2 पेपर से परिश्रम करने को पड़ो ना एंड यू विल बी गेटिंग ए डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रेज योर स्किल ऑफ GS1 जनरल अवेयरनेस पेपर रो GS1 टाकू आपन को स्ट्रेंथन करिया पड़िबो काहे जो ASO रो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सेटिंग पैटर्न ऑफ जनरल अवेयरनेस इज फार बिलो इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ OS प्रीलिम GS पेपर 1 GS पेपर 1 टा होची बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर OS किंतु ASO रो जो जनरल अवेयरनेस टा अछि सेटा कोन बहुत टफ आसेनी तो तापाई तुमको अधिक टिके परिश्रम करिया पड़िबो एंड फॉर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट यू विल बी गेटिंग ए टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 50 to 55 days 55 days और डेज पाखापाखि 55 दिन तुमको टाइम मिलिबो कि तुमरो GS पेपर 1 टाकू तुम स्ट्रेंथन करो तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट दैट इज वन। देन IAS मेन अपियरिंग स्टूडेंट जो माने ऑलरेडी IAS मेन पे प्रिपेयर करछंती दे नीड नॉट हैव टू do anything they supposed to be continuously focusing on IAS main post IAS main they can appear OS prelim generally जो माने IAS रो prelim crack करिसंती OS prelim is nothing in front of them so I do not think they need some extra preparation they need to revise some important information and current affair then automatically they can directly go for OS examination on 16 October 2022 so for that them it is not a difficult task OS first time appearing aspirants for it is very important OS there is another group of students who are OS appearing for the test the important OS examination for the first time our discussion will be on that particular thing and there are some students who are miscellaneous they can divide their own miscellaneous exam means banking railway then other exam SSC all those kind of a people they can devise their own strategy this particular discussion about OS who is totally focused on OS specially then see it is not an hard and fast and it is not on cast on stone that whatever I have written as strategy you supposed to be following that person to person strategy also differs a particular person who is having strong point in general studies paper 1 may not be requiring this kind of a strategy so the best part is try to take the cross the important aspect then modify it as per your need as per your strong point or weakness जदि आपण निजर स्ट्रांग पॉइंट और निज वीकनेस से हिसाब रे निज को डिवाइड करबाटा बहुत जरूरी देन अगस्त रे हम पाखरे अछि 30 दिन सितंबर हम पाखरे अछि 30 दिन एंड अक्टोबर रे हम पाखरे अछि 15 दिन एंड 16 अक्टोबर इज द एग्जाम सो व्हाट सपोज टू बी योर स्ट्रेटजी मु कहिली कि मेन पाई मे बी OPSC कम टाइम दे पारे ए पाली डिसेंबर मास रे 2022 पाई नोटिफिकेशन मे बी 31 डिसेंबर पूर्वरु और 31 डिसेंबर रे जेमिति लास्ट ईयर आस्थिला सेम टाइप OS रो 2022 रो वैकेंसी नोटिफिकेशन आसी पारे एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू conduct the OS main examination as soon as possible सेथि पई जो प्रेशर रहिबो सेथि पई 2021 रो मेन पई बहुत जल्दी हो जाय पारे जनरली जनवरी फेब्रुआरी तो बहुत कम टाइम मिलिबार चांसेस अच्छी आई एम टेलिंग यू चांसेस आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली जनवरी और फेब्रुआरी में ही शेड्यूल हबो तो चांसेस आर देयर सो यू सपोज टू बी अगस्त मास रे जदि आपण कॉन्फिडेंट अछंती अगस्त मास रे ट्राई टू डिवोट 60% ऑफ द टाइम इन मेन प्रिपरेशन दैट आल्सो ऑप्शनल प्रिपरेशन ऑप्शनल रो पेपर 1 अछि पेपर 2 अछि ताकू टाइम दबाकू पड़िबो तो ऑप्शनल अगस्त मास रे ऑप्शनल पई भी बहुत टाइम काढंतु I personally suggest you because see optional is having huge weightage in OPSC OS selection having two optional subject worth 1200 marks is a huge making difference
it can make a difference. So optional 1 and optional 2 by time kadantu August masare, my personal suggestion, because you will not be getting that much of a time post prelim examination रे आपन को सेते टाइम मिलिबनी ऑप्शनल पे फोकस करियो पे से टाइम रे आपन कोन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिवे. सो this is the best time. August is the best time in order to strengthen your this particular aspect. Then prelim पे काढंतु 40% टाइम काढंतु prelim पे आपण जेति की भी टेस्ट प्रैक्टिस करूचंती पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, देन इकोनॉमिक्स, देन साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, all these things prelim पे आपण जेति भी टाइम काढंती, फॉर एग्जांपल 8 घंटा प्रिपरेशन 6 घंटा प्रिपरेशन, 40% टाइम काढंतु prelim पे आउ जो 60% टाइम दियंतु अगस्त मास रे फॉर मेन प्रिपरेशन. अगस्त रे मेन प्रिपरेशन टाइम रे भी आपण फर्स्ट 3 दिन गोटे ऑप्शनल नियंतु, देन लास्ट 3 दिन फॉर एग्जांपल थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे टेक अनदर ऑप्शनल, because do not frequently change the subject. For example, today I studied a particular optional, say political science. Tomorrow I shouldn't be shifting history. At least for political science I supposed to be reading at least 3 days. Then history at least 3 days. If you are reading optional in this way, then there will be a continuity. तमे continuity गोटे बनी रहिबो, आउ तमे गोटे कनेक्शन इंटरलिंकिंग करि परिबो. आउ जदी फॉर एग्जांपल आज मु हिस्ट्री पढ़ली, काली पॉलिटिकल साइंस, तापर दिन आउ थरे हिस्ट्री, तापर दिन पॉलिटिकल साइंस, एमिति करले कोन रैंडमली तम माइंड शिफ्ट हो. आउ जो कंटिन्यूटी दरकार माइंड रे कोन गोटे कंटिन्यूटी दरकार गोटे इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करिया पे, सेटा को प्रॉब्लम क्रिएट हबो. सो फॉर दैट रीजन आई सजेस्ट जनरली जो माने हमर मेन रो कोर्स नै थिले से माने को भी मु ए टाइप ही सजेस्ट करथिली. तो बहुत इंपोर्टेंट एटा जो करिबाटा बहुत जरूरी. फर्स्ट 3 दिन गोटे सब्जेक्ट पढ़ो, नेक्स्ट 3 दिन नेक्स्ट गोटे सब्जेक्ट पढ़ो. तो आउ संडे रखो कि रिवीजन ऑफ बोथ द थिंग्स. साइकोलॉजी सेज इफ यू विल नॉट रिवाइज अ पर्टिकुलर थिंग देन ऑटोमेटिकली इट वैनिशेस फ्रॉम योर मेमोरी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू re-emphasize whatever you have studied throughout the week. That needs to be again, you have to revise that on a particular day, and that's supposed to be on Sunday. Sunday supposed to be for revision plus appearing test series and analyzing your performance and week area. Then September मासरे strategy रे टिके different करिवे. जो माने भाबुचंदी कि प्रिलिम से मानकर स्ट्रांग पॉइंट नाही, प्रिलिम पाई सेते पढ़ी नांती, दे सपोज टू डिवोट 70 to 80% टाइम ऑन प्रिलिम. आउ जो बाकी टाइम रहिला, आउ जो 20% टाइम रहियो, दे कैन बी फोकसिंग ऑन मेन. जो टाइम टा अछि सेटा को मेन रे देबे. देन October 15 ओनली प्रिलिम, माने अक्टोबर मास स्टार्टिंग टू आरंभ करी एग्जाम ऑन 16 टोटली प्रिलिम पाई ही फोकस करंतु. ताकू आउ बिल्कुल याडे टोटली मेन पाई टोटली यू टेक इट इनटू ए डिफरेंट लेवल. माने मेन टाकू छाडी ओनली फोकस सपोज टू बी ऑन प्रिलिम ओनली. सो व्हाट सपोज टू बी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2. ताई जे भी मु कहि देली कि जीएस पेपर 1 पाई और जीएस पेपर 2 पाई जो भी आपण प्रिलिम टाइम अछि, जदि आपण भाबु जंदे कि जीएस पेपर 2 टा मोर वीकनेस अछि, ता पाई भी एक्स्ट्रा टाइम काढंतु. मैथ, रीजनिंग आउ द न्यूज़पेपर जदि आपण ठीक से पढु जंदी तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग पाई बहुत हेल्पफुल हबो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग पाई. सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. appearing test series, I told you appearing test series is very important. जदि आपण appear test series appear करूचंती, आपण निजर वीकनेस टाकू आपण जणा पड़िबो. को कांसेप्ट रो वीकनेस अछि, को इन्फॉर्मेशन रो वीकनेस अछि, को करंट अफेयर रो, हिस्ट्री रो, पॉलिटी रो, ज्योग्राफी रो, एनवायरनमेंट रो, इकोनॉमिक्स रो, साइंस एंड टेक रो को जिंसटा वीकनेस अछि, सेटा को आपण रिवाइज करी आपण सेटा को स्ट्रेंथन करि परिबे. दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. In September also you need to do the same thing, appearing test series, analyzing your performance and improving upon the weak area. That's supposed to be your process on August and September, and continuing another 15 days till the exam on 16 October 2022. Then appear the best test series designed by us. We have already told you that our book and our test series, apart from this our test series is going on, and because this is last time which is going on,
we are providing the heavy discount on our test series. Our book we have covered current affair. बहुत जनक मध्यरु आपनक मध्यरु ये क्वेश्चन आसुची कि करंट अफेयर आमे केते कवर करिछु. करंट अफेयर आमे कवर करिछु सेप्टेम्बर 2020 रु एप्रिल 2022 पर्यंत. सेप्टेम्बर 20 रु आउ 22 एप्रिल पर्यंत सेतिकी आपनकु टेंशन नबाकू पड़िबनी. बुक रे ऑलरेडी कवर अछि. So all those people who have already got our book, do revise as much as you can. Then last day discount up to 50% discount. हमरो जो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चली छी सेमानक पई लास्ट मिनट केंगी बहुत कम टाइम बंची गला. आउ many of you are willing to get inside the OS examination and this is our crash course. जो माने ऑलरेडी जॉइन करि सालेनी सेमानकु बहुत कंटेंट दिया ही चललानी, सेमाने रिवाइज करूछंती. And if you want to join, you can join. Still, you can join. It is on 2,499. I am telling you, no coaching institute can provide this kind of a level of content and research work. Especially, तुमको कौन दिया है वो 60 plus test. GS1 रो 60 plus test. Generally, it is more only because current affair रे हमें 15 ରୁ 16 टा already test extra ही दे सारजू. पाखापाखी आपण जदि कैलकुलेट करिवे सेक्शनल 30 टा प्लस फुल लाइन 30 टा प्लस करंट अफेयर रो 15 ରୁ 16 टा ऑलरेडी दिया ही सरची ऑलरेडी. सो इट इज वेरी हेल्पफुल. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू विल बी गेटिंग जीएस पेपर 2. ऑलरेडी हमरो जीएस पेपर 2 रो भी 20 टा टेस्ट दिया हबो. माने जीएस पेपर 2 रो भी 20 टा टेस्ट आपनकर इंक्लूडेड अछि. 2499 रुपीस रे आपनको 20 एतिकी सबु. अपार्ट फ्रॉम दिस देन जीएस प्रीलिम स्पेसिफिक कंटेंट, इंपोर्टेंट वेबसाइट लिंक, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जोटा कि बहुत रिवीजन करबा दरकार. स्पेशली मेडिकल टाइम रे की कोड डिपार्टमेंट हैंडल करथुले, देन अष्टप्रधान रो रोल कोन, देन ये बहुत किछि जोटा कि रेगुलरली क्वेश्चन पचारुची ओपीएससी तार रिलेटेड कंटेंट भी दिया हिची. So it will be helpful. Apart from this, 1000 plus research based MCQs in many of the sectional. बहुत गुड़िया sectional रे 1000 plus research based MCQ जो related question generally OPSC पचारे तार related question हमें देइछु. ताको छाड़ी each section you will be getting. Then 100% prelim guaranteed. Our course रो generally हमें सही type design करा हिची. ये आपनों को prelim OS prelim टा न रहो. Because 433 vacancies generally they do not bring this kind of a vacancies too often. So it is the best time to grab this opportunity and make yourself count. And all those people who have already appeared main examination, they will see if something goes wrong, they will also be appearing for the examination. So seti pai bhi eta बहुत helpful hobo. Then current affairs covered in detail. As I have told you, current affair amaro test series course रे बहुत भलो cover हेची and do get it. What supposed to be your target? जो 16 अक्टोबर रे जो अच्छी examination, तमरो target कौन रहिबा दरकार. तमे देखिबा दरकार कि 55 after deduction. 55 टा क्वेश्चन मोर ठीक होबा दरकार after deduction. Again I am repeating this particular view that after prelim my prediction will be different, but now I personally suggest you, irrespective of your caste or any kind of a category, you supposed to be targeting 110 marks and above. 110 मार्क टू अधिक मार्क आनिबा पई सेटा तम टार्गेट रहिबा दरकार. 65 रु 70 टा जदी क्वेश्चन आपण ठीक करछोंती जदी जनरल स्टडीज रे जदी 65 रु 70 मु टार्गेट दोउची कि सेति कि आपण ठीक करूचंदी, then nobody can stop you from appearing the main examination of 2021. ए जो 433 वैकेंसी रो मेन एग्जामिनेशन पई कि आपण को रखि परिबो नाही. सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. तो आपण को टार्गेट रहिबा दरकार कि 65. जदी 65 टा भी जते ठीक हेउची तो आपण को पाखरे क्वेश्चन अछि, माने पाखा पाखी 10 टा क्वेश्चन रो you are having that particular cushion. They OPSC generally follow करे 0.25% स्पेशली जदि गोटे 4टा क्वेश्चन भूल होची तो आपनकर गोटे राइट आंसर जीवो.
तो ऑटोमेटिकली आपण पाखरे एतिकी क्वेश्चन रहिबो कि आपनकर जो स्कोर ता रहिबो सेटा 110 एंड एबव. When I say 110 and above, irrespective whether gender, that is male or female, you supposed to be targeting 110 and above, irrespective of your category. I am telling you frankly, and I have repeated that in many of the videos. So it is very very important. ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ. ୱିକଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି. ମଣ୍ଡେ ପଲିଟି, history. I am giving you a simple example. It doesn't mean that you all do the same thing. You do as per your planning. The planning supposed to be जदि फिल्म ପାଇଁ जो टाइम दउचंती सेटा मो कहबा अनुसार कि आपण एई टाइप आपण शेड्यूल करि परिबे. पॉलिटी आपण मंडे रे शेड्यूल करि परिबे, हिस्ट्री आपण ट्यूसडे, देन वेडनेसडे रे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट रिलेटेड, देन इकोनॉमिक्स रिलेटेड जोटा भी आपण थर्सडे प्लान करंतु. ताकू छाड़ी की साइंस एंड टेक दा फ्राइडे करंतु, देन करंट अफेयर दा सैटरडे करंतु, आउ फाइनल रिवीजन दा करंतु संडे. जेतिकी सब वीकली जेतिकी प्रीलिम पई पढिले सेटा को संडे रिवाइज करंतु. सो आउ टेस्ट भी दियंतु, एनालाइज योर परफॉर्मेंस. बहुत जण मिस्टेक करंती कि दे डोंट एनालाइज देयर परफॉर्मेंस. आज मु गोटे टेस्ट अपियर करली, से टेस्ट रे मोर को सेक्शन रे अधिक क्वेश्चन रॉन्ग हला. से क्वेश्चन टा जदि रॉन्ग हला तो कौन पई हला, नेक्स्ट वीक रे मु जतल अपियर करिवि आ से कांसेप्ट से इंफॉर्मेशन मु बाय हार्ट करबा दरकार. सो गोटे वीक रो गोटे शेड्यूल हला परे नेक्स्ट वीक रो टारगेट सेट करी सेटा को ट्राई करंतु कि नेक्स्ट वीक रे ए क्वेश्चन टा मोर रॉन्ग न होबा दरकार, ए कांसेप्ट टा मोर बाय हार्ट होबा दरकार. लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह, देन रवि पी अग्रहरी, देन मु कहितली कि ये सब जिन जो स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी एंड एनवायरनमेंट मु कहितली शंकर आईएएस ज्योग्राफी, शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक, ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी से ज्योग्राफी रो जो इंपोर्टेंट एनसीईआरटी रिलेटेड बुक और माजिद हुसैन, जदि आपण माजिद हुसैन अछंती सेटारु टोटली फोकस करंतु. जो दिन जो टारगेट अच्छी से टारगेट टा को कंप्लीट करिकी आपण रेडी हुंतु कि संडे रे मते टेस्ट अपियर करिवि. जदि आपण डेली अपियर करछंती आउरी भलो, डेली अपियर करिकी सेटा को एनालिसिस करंतु. दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. संडे टा को मु कहिबि कि आपण सब बेले रखंतु करंट अफेयर पई, सॉरी नॉट करंट अफेयर, फॉर रिवीजन पर्पस. रिवीजन पर्पस पई रखिबाटा बहुत जरूरी. सो दिस वाज ऑल अबाउट फोकस स्टडी. आपण फोकस स्टडी करिया रे हमरो क्रैश कोर्स रे हमें ऑलरेडी जो माने हमरो क्रैश कोर्स नै चंती सेमानो को मु कहिबि कि ऑलरेडी 1000 प्लस एमसीक्यू सब सेक्शन रे दिया हिची. सेक्शनल टेस्ट विथ आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट रे दिया हिची. सेटा को आपण कंटीन्यूअसली रिवाइज करंतु. जेते अधिक रिवीजन करिवे सेते अधिक बेनिफिट मिलिबो. नॉट ओनली फुल लेंथ टेस्ट रो हमरो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट रे आंसर, इवन सेक्शनल टेस्ट रे भी बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट रे आंसर अछि. से जिनछटा को ठीक से रिवाइज करो. ताकू छाड़ी की जेतिकी सब करंट अफेयर अच्छी आपण जानछन्ती एबे बर्मिंघम रे टेस्ट एबे गोटे कॉमनवेल्थ गेम हबो, तो सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट हे जिवो 16 अक्टोबर पई. 16 अक्टोबर कॉमनवेल्थ गेम जेतल हबो तार जो इंडिया रो परफॉर्मेंस हबो सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट हे जिवो ओएस एग्जाम रो प्रीलिम पई. सो यू हैव टू कांस्टेंटली कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ. सेटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट. Now coming to the second part of our discussion is OS interview tips. बहुत जन अछंती कि इंटरव्यू पई अपियर करो, स्पेशली प्रिपरेशन करिबा दरकार स्पेशली. एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू ऑलवेज ट्राई टू डिस्कवर योरसेल्फ. बहुत जन मेंटर बहुत जन डायरेक्शन देबे आपनको, किंतु आपनकर सेल्फ डिस्कवरी आपनक हाथ रे कि आपन कोन निज रिलेटेड. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी. Interview is all about what a person you are, be it male or female. Generally gote decent dressing is very very important. Dressing आपनकर बहुत भलो रहिबा दरकार. The moment you enter the may I come in sir, then greeting the person, greeting the chairman, greeting the board members. If a lady member, then namaskar ma'am, then to the male members नमस्कार करिकी समस्त ग्रीट करिबा. जनकु जस्ट नमस्कार करी जनकु देखिबाटा बहुत इंपोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट सिट टिल द टाइम somebody tells you to sit. And when you are, if somebody opens a door for you, then also you have to need to
thank that particular person who has opened the door for you, and after getting the seat, say thank you who has offered you the seat. Apart from this, your leg position, there are certain basic rules which I am telling you in interview you supposed to be following. Your leg position, your feet position supposed to be front forward, and your hand position supposed to be on your knee upare apanଙ୍କର hand rest ରହିବା ଦରକାର throughout the interview. You need not have to be a political, you can say, person and means making so much of a hand gestures. All the hand gestures are specially not allowed in interview. Generally आपण गोटे जिनस माइंड रे रखंतु कि hand gestures are totally prohibited in interview. Interviews रे कोन आपण गोटे एज ए कैंडिडेट जाइछंती तो आपणकर हैंड रो गोटे स्पेसिफिक पोजीशन रे रखंतु, एंड थ्रू आउट द इंटरव्यू यू नीड टू बी, you can say, comfortable but stiff, means गोटे जगह रे बसी कि आपण इंटरव्यू दउचंती. hand even head movement, your eye contact is very very important. Being a psychology, you can say postgraduate in psychology, I tell you the body language, if you are making so much of a gesture, that shows you are underconfident. Your body language, if you are making a particular, you can say, hands on resting on your knees and you are answering by looking into the eyes, eye contact is very very important in all the interviews, be it private sector or public sector. If you are looking here and there, that shows you are underconfident. I am telling you, I am repeating this, eye contact is very very important. You have to practice this with either mirror practice. I am telling you, mirror, in front of the mirror, try to read a particular question and try to answer yourself. You can also do by shooting your own answers in your video. आजिकल मोबाइल अच्छी, मोबाइल रे आपण शूट करी निजर एक्सप्रेशन टा देखंतु, ताइरे कोन कोन करेक्शन करि परिबे सेटा निजे देखंतु. ताकू छाडी, इफ एनीबॉडी ऑफ योर फ्रेंड इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, दे कैन आल्सो मेक ए बॉडी पेड एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यू ऑफ ईच अदर. जड़े आपणकर सांग कहतु से क्वेश्चन पचारे आप आंसर देवे, आपण क्वेश्चन पचारतु से आंसर देवे. एमती बॉडी पेयर सिस्टम रे भी प्रिपरेशन ऑनलाइन गूगल मीट रे भी आप करें. आउ जदि आपण सांग पाखरे अच्छी गोटे निजे रूम रे आपण प्रैक्टिस करंतु, सेटा बहुत बहुत हेल्पफुल हबो. सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड डाटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड CIF. OPSC तार वेबसाइट रे आपण देखिबे, वेबसाइट रे CIF कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एटा अच्छी आ मु हमरो OCS रो डिस्कशन फोरम, इंटरव्यू डिस्कशन फोरम आ क्रैकर्स ग्रुप रे ऑलरेडी पकेइची टेलीग्राम रे. तो आपण एटा ये करंतु, फिल अप करंतु ठीक से. जो सब इन्फॉर्मेशन अच्छी ए रिलेटेड क्वेश्चन आपण को इंटरव्यू रे बहुत पचारिबार संभावना अच्छी. सो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो आप डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड डाटा कौटू पाइपर. फॉर एग्जांपल संबलपुर, यू बिलोंग टू संबलपुर.nic.in. if you belong to ganjam.nic.in. if you belong to khurda, then khurda.nic.in. if you belong to katak, then katak.nic.in. सेठारे आपण इंटायरली डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाई परिबे. हु इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, व्हाट इज द लिटरेसी लेवल, the population. Apart from SC ST population, what is the SC population, what is ST population in your district, what are the problems, what are the tourist places. All these are very very important. Apart from this, why there is so much of unemployment, why there is your district is lacking in industrialization, and what are the 3 important tourist places to visit, what are the important, you can say, who were the important personalities from your district. हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जदि आपन डिस्ट्रिक्ट रे किए थिबे, तांको विषय रे, तांको हिस्ट्री विषय रे, से विषयटा आपन को पचारिबा दरकार. निजे ऑलरेडी प्रिपेयर करंतु. अपार्ट फ्रॉम दिस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मु जेमेति कहली कि आपन को स्कूल, को यूनिवर्सिटी रे आपन करिसंती ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. जदि आपन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपन कोठारे करिसंती, से फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर institute, university, you have done a particular graduation, then you need to know about its history. कि से यूनिवर्सिटी केबे एस्टैब्लिश हेतिला, who was the first vice chancellor, who was the current vice chancellor, important happening which has happened recently in your institution, if you are aware of.
then that is also very, very important. Important alumnus or important personalities from your, you can say, institute or educational university. So that is very, very important. Apart from this, employed people about their job. Employed people about their job कि सेमाने कौन काम करथुले, and if say somebody is from IT sector, how your IT experience will helpful in your administrative job. You need to prepare a particular answer for that particular thing. There is so much of a IT, you can say, cyber crimes are happening, and how if you are having some kind of a solution to that, you need to prepare a question or answer for that particular thing. So that is very, very important. And why do you want to join OS? If you are getting a good package in a private sector, why do you want to join OS? You need to prepare a particular wonderful answer. It gives me a diverse experience, administrative job, or you can say some people who are inclined towards police service, they can be telling that charm for the uniform. So you need to say that from my childhood dreams, I had a dream to join administrative job. That's why even though I was in IT sector, still I started preparing for civil services, and currently sitting in front of wonderful people like you and appearing and giving my OS interview for OS selection. So these are the things which you need to inculcate. If you think job security is there is nothing wrong in telling job security. So this is all about your personal, you can say feeling that should reflect in your answers. You shouldn't cook up a particular thing or watch a particular topper's interview and try to do this particular thing in front of board members. Board members are really experienced people, great experienced people. They will definitely catch you. Do not try to bluff. If you are thinking that okay, job security or these are the things which your childhood dream was there, and you want a diverse work field of IAS administrative job, then implementing, some people will also say implementing government schemes, and in the real ground level, providing the last mile distance, providing the services to the persons standing last in the queue, the last mile distance. Some people also tell I want to eradicate corruption. Whatever you feel, you need to have a valid justification, and that should come from within. It shouldn't be somebody will be telling you to do this and you will be telling to the board member. That shouldn't be happening. Every answer is a right answer in interview if you are having proper justification. Then sports, hobbies, extracurricular activities. Sports, if you have participated in university level or you can say the district level, then you do mention. Apart from this, hobby related question. Watching TV cannot be a hobby. Listening to music, what kind of a music you listen, who all are the, you can say, important singers whose music or whose singers songs you listen. All this. Apart from this, if you are reading book, then what kind of a book you read, what are the things, and whatever it is, you need to be making a complete data about your hobby, because there can be a cross question regarding your hobby. Cooking food, what kind of a food you cook. All these things are very, very important. Apart from this, special achievement, if any, if you have participated in NSS, National Social Service, or NCC, or you can say any kind of a blood donation camp, organized any particular thing, any special achievement, whatever special achievement you have done, any special achievement if you have done, do mention. Blood donation, then organizing a NCC camp, any or you were awarded by a collector or some important personality, or did some social work, or if you have got a certificate. They generally will be asking you certificate for this, but if you have participated and you have got some kind of a recognition, then do mention it in this particular thing. Optional subject, there can be question from optional, how your optional will help you in your administrative job, how political science will help you in administrative job, how sociology will be helpful in your administrative job, how history
knowledge in history will help you in administrative job, how geography related you can say knowledge will help you in administrative job, how psychology will help you in administrative job. All this you need to prepare. Whatever your optional, you need to prepare that how it will be helpful in your administrative job. Apart from this, preference for post of service, and while prepare, you can say filling up the form, you might have made any kind of a general procedure. Say some people will be filling OPS ahead of OS. Then you need to tell, sir, I am totally inclined towards uniform, the charm of uniform of police. Some people will be filling police Odisha police service at the last. Then why last? It is a group A service, and how you are putting it last? You should have a valid reason. Sir, my job, my skill, my level of my things are not applicable for suitable for OPS. For that reason, I filled it last. So you need to have a valid justification. I personally incline towards administrative job. Then say I am inclined towards administrative job. For this, my reason is this. Some people will fill up ORS ahead of OS. For that reason also you need to have a say I am very much inclined towards revenue, how revenue will be coming, how revenue is going. I am inclined towards that. For that reason I have filled up ORS. So this is the thing you need to justify. Apart from this, Odia newspaper, you need to be aware about what is the current happening news related to Odisha, and from where you will be getting all this news. Samaj, Sambad, then Dharitri, then Anupam Bharat. These are the Odia dailies. You can take any one of those and try to prepare your Odisha level awareness from that. And if you want an English version, then Odisha Post is a wonderful English version newspaper of Odisha, and it will help you in gathering ample information related to Odisha and Odisha related issues. Apart from this, I told you health related issues. Health related issues during Corona time. What was Odisha's strategy? How do you think Odisha's strategy was fulfilled during Corona times? And what are the schemes started by Odisha government in order to counter Corona? And what was the Gram Panchayat role? What was the district magistrate role during Corona? And do you think that is helpful, or Odisha should have done something differently? All this you need to prepare. Or there is a orphan related scheme started by Odisha government. Let me know in the comment section what is the scheme called. Apart from this, education related issues. Education, what are the education related problems? Why Odisha's people, especially our Odisha's education system, what are the problem areas? And why there is so much of a dropout? Why our Odisha's literacy rate is so low? And what are the problems? What can be done in order to bring all those students who left the school before Corona, and how to bring them to school again? What are the challenges? Then you need to prepare really well. What are the facilities need to be given in the school? And if you are a video or you went for a field visit to a particular school, what are the things you will be checking in that particular school? All these you need to prepare. Apart from this, employment related issues. Odisha's, what are the employment related issues are there? Why there is so much of unemployment? What are the things can be done? What government steps has been taken in order to reduce the unemployment? Skilled in Odisha, how the skill training is going on, how the skilled people are getting placed in important industrial places. There is you can say the Odisha conclave where investments are flowing. How much was the, you can say, the total investment in the last conclave? All this you need to prepare. Apart from this, development related issues. Development means road, electricity, water. All these are very, very important. Road related problem, and the electricity penetration, water, drinking water penetration. In many of the areas, drinking water is still not available. What are the problems? In some of the, you can say, remotest places, the drinking water has not reached. So that is very, very important. You need to prepare. Apart from this, environment related problems. You belong to whichever district, what are the river is there, and if any river related pollution is there, if any important industrial plant is there which is directly releasing the water, polluted, untreated water into the river.
then you need to prepare that. Then CPCB guidelines, State Pollution Control Board guidelines, that is very, very important. Situation reaction as SDM, BDO, Tahsildar. Situation reaction as SDM, BDO, Tahsildar, that is very important. You need to prepare. Okay, some you can say people are sand mafia, they are doing sand mining, and how you will be. See, in Haryana there is a DSP who got killed by the sand mafia. So they can relate a particular question and ask you a particular situation related to this. As a SDM, how will you control it? Or if there is some illegal encroachment, how will you overcome the illegal encroachment? And what are the rehabilitation scheme for the, you can say, the slum population? Slum population, there is a rehabilitation scheme is there. Let me know in the comment section. Then all these situation reactions are very, very important. There can be direct question related to this. You need to be totally prepared. Apart from this, women empowerment, if you are woman, then there can be a question that what are the things you supposed to be doing for women empowerment. Then what are the Visakha guidelines of Supreme Court. Then what are the schemes started by central government or state government for the women empowerment. Self-help groups, what are the benefit given to self-help groups or development of entrepreneurship skills in the women. That is very important. Corruption related issues. There can be corruption related issues. There is so much of a corruption which is happening by the public servant. What are the action you will be taking in order to stop corruption? Prevention of Money Laundering Act is there. Then you can say Prevention of Corruption Act 1988 is there. Then what are the provisions and how people in your administration you will stop corruption? Then transparency, you can say this RTI, how you will be implementing RTI. That is very, very important in order to bring transparency. Then apart from this, state, river, water, border issues and Supreme Court judgment. Say a state river water dispute, Mahanadi river water dispute, it is among which states? And what is Supreme Court? What is current situation of Mahanadi river dispute? What is Kotia dispute? And how Kotia dispute? What are the judgment? What is the status quo of the Kotia and in between Odisha and Andhra Pradesh? All these you need to be totally thorough. Apart from this, tourism sector issues. Whatever the tourism sector related issues, the development scheme started by Odisha government to develop many of the tourist places, just like Jagannath temple, Taratayani temple, then Katak Chandi temple, then Samaleswari. All these tourism then related to tourism development in Chilka Lake. All this, how it can be helpful in our economy, and what is the tourism potential, how our tourism sector has not been, you can say, make good marketing, just like as Kerala is promoting God's own country, or Madhya Pradesh is promoting heart of, you can say, the heart of Odisha, India. All this you need to be making for the tourism sector related. Then agricultural problems, whatever agricultural problems are there, government scheme are there, Kalia scheme are there, there is so much of a loan provided to the farmers, and the 3 farm bills which were repealed by the central government, what were the provisions of that particular farm bill? So all this you need to be preparing. Then apart from this, all state government schemes, you need to prepare all the state government schemes. State government schemes, what are the state government schemes started by Odisha government? You need to be thorough. Apart from this, GST related, direct tax, indirect tax, and there is a, you can say, what is, let me know in the comment section. 15th Finance Commission has recommended how much percentage of Odisha's share in the central pool. In the central pool, what is Odisha's share as per recommended by the 15th Finance Commission? And if you think that you need some feedback related to CIF and what kind of a question can be asked, then do let me know. Fill this particular CIF form and do send me 9937626493. So I hope this particular video is got informative. If any of your friends is also preparing for the same, do share with them. If you are new to our channel, do subscribe this particular channel. Thank you very much. Happy learning.